Hello, dear scholars. Welcome to English Minds. Unlock the magic of English literary terms. I hope you are a serious applicant, scholar. Please ensure you have a pen and paper ready to take notes or complete your assessment accurately. Today's part 4 session. Let's begin without delay. Very first question. Which of the following statements best defines the essence of expressionism as a literary movement? Option B. It emphasizes the inner emotional experience and subjective perception over realistic representations. मीन्स एक्सप्रेशनिज्म का एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट था जो एक्सटर्नल रियलिज्म को रिजेक्ट करता था और इंस्टीड इंडिविजुअल के इंटरनल इमोशंस और मेंटल एक्सपीरियंस को एम्फसाइज करता है. इसमें दुनिया का दर्शन एक डिस्टर्ब या टॉर्मेंटेड लाइक एब्सर्डिटी माइंड के थ्रू दिखाया जाता है. ये रियलिज्म का ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि सब्जेक्टिविटी को हाईलाइट करता है. एंड रियलिज्म एक्सप्रेशनिज्म का एकदम से अपोजिट है. इट्स एम्ब्रेसेस स्ट्रिक्ट रियलिज्म टू पोइट्री, एक्सटर्नल रियलिटी इन लिटरेचर, एंड सी इट एम्स at reviving classical forms of drama and epic traditions. The projection of psychological reality through unconventional form of structure. So, option B is correct answer. Expressionism, a literary movement dominant especially Germany during the decade following the First World War. It borrowed its name from a more precisely definable moment in a painting in which external realism was abandoned in favor of a more subjective approach. In its literary use, it comprehends almost any deliberate disregard of reality. It also aims at presenting how the World War appeared to the troubled and often abnormal mind of a character in a work. It also projects into the construction of the work and the concepts and attitudes of the artist himself. There is also a departure from standard principles of sequence and construction. O'Neill, the Harry App is an expressionistic drama. Next. Expressionism is in literature is chiefly concerned with option C, the projection of psychological reality through unconventional form and structure. एक्सप्रेशनिज्म का कोर कंसर्न साइकोलॉजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करना है. साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल. इसमें स्ट्रक्चर और टेक्निक अनकन्वेंशनल होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेड डायलॉग्स, डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर्स और सरियल इमेजरी. ये बियॉन्ड रियलिटी जाकर इमोशनल और मेंटल कियोस को डिपिक्ट करता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. एंड द डिपिक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट विद ऑब्जेक्टिविटी, ये हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट है. व्हाट? एक्सप्रेशनिज्म. एंड सटायर रियलिज्म का ही टूल है. एक्सप्रेशनिज्म डीपर साइकी को टारगेट करता है. Romantic pastoral revival is not the focus. So, option C is correct answer.
Which of the following plays is considered a prominent example of expressionist drama in American literature? Option C, The Hairy Ape. Eugene O'Neill का द हैरी एप एक क्लासिक अमेरिकन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है जो एक वर्किंग क्लास मैन के एलिनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाता है। इसमें एग्जैजरेटेड डायलॉग्स, सिंबॉलिक सेट्स और डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं एंड लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट इन साइकोलॉजिकल रियलिज्म। दिस इज साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड डेथ ऑफ सेल्समैन में एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक है, बट इट इज अ मॉडर्न रियलिज्म एंड आवर टाउन इज मिनिमलिस्ट। दिस इज मिनिमलिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in expressionist drama, narrative sequence and structural coherence are often option B subordinated to emotional truth and inner turmoil. एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में क्रोनोलॉजिकल या लीनियर नैरेटिव को तोड़ दिया जाता है ताकि इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रुथ को ज़्यादा इफेक्टिवली दिखाया जा सके। सीन्स का ऑर्डर सिंबॉलिक होता है, लॉजिकल नहीं। ये फ्रेगमेंटेड और ड्रीम लाइक होते हैं एंड लॉजिकल इन्हांस्ड फॉर लॉजिकल क्लैरिटी। तो इन्हांस एंड लॉजिकल क्लैरिटी रियलिज्म में होता है। क्लासिक यूनिटीज टाइम, प्लेस एंड एक्शन को ये तोड़ता है, फॉलो नहीं करता है। डिटरमाइंड बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी से ज़्यादा इनर केओस इसमें इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इसमें सीक्वेंस मायने नहीं रखता, इसमें केओस मायने रखता है। उथल पुथल। नेक्स्ट, the expressionist technique typically involves a projection of option C the artist personal concept and emotional response। एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट के सब्जेक्टिव विजन को सेंटर में रखता है। एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट के सब्जेक्टिव विजन को सेंटर में रखता है। ये पर्सनल इमोशंस, हैलुसिनेशंस, फियर, एंजाइटी जैसे एलिमेंट्स को आर्ट के जरिए प्रोजेक्ट करता है। आर्ट बिकम्स अ मिरर ऑफ आर्टिस्ट disturbed psyche and a rational inquiry into scientific problems. This is also realism part. And expressionist artist emotionally involved होता है, डिटैचमेंट नहीं होता है उसमें ना, इमोशनली इन्वॉल्व होता है वो तो। रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन फ्री फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन, ये रियलिज्म का फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन को डिस्कार्ड करता है। नेक्स्ट, what is the primary purpose of a fable in literary tradition? Option C, to deliver moral instruction through anthropomorphic characters। Means a fable is a short narrative often with animal or inanimate objects as characters that conveys a moral lesson. The animals are given human traits. Classical model AESOP fable 16th century BCE। इंडियन एग्जाम्पल पंचतंत्र।
Fable always end with a didactic moral, often explicitly stands. Fable, a short narrative poem which conveys moral instruction. The characters is in it being usually animal or inanimate objects. Example: Aesop fables. Next. Which of the following best describes the narrative structure of a fable? Option B: short and concise story with animals or object and characters. Fables are brief, simple, and didactic. They rely on symbolic representation through non-human characters like animals or things. Example: fox, lion. Moral stories: trees. Factual, and the structure is typically linear with a clear problem solution pattern and ends in a moral teaching. Next. The tales of are often cited as option C: classical models of fable writing. Fables are the prototypes of Western fable tradition. They influenced later fable writers like Fontaine and Dryden. The tortoise and the hare, the fox and the grapes. The fox and the grapes. अरे अंगूर खट्टे हैं. And the grapes. So was Greek slave and storyteller believed into have lived around 620 to 564 BCE. 620 to 564 BCE. Next. What literary forms is exemplified in Chaucer's Merle's Tales and Reeves' Tales? Option B: Fabuleux. प्लूरल, इसका प्लूरल फॉर्म होता है FABLIAUX. A humorous tale popular in medieval France. Fabuleux, France. Fables were stories of various types, but one point was uppermost: humorous, sly satire. These stories often dealing with sex, dealt familiarly with the clergy, ridiculed womanhood, and was readily understandable to anybody. Chaucer especially leaving examples of fables in the tales of the Miller and the Reeve, Merchant and Shipman. These tales from Chaucer's Canterbury Tales are classic example of comic earthly tales, usually about trickery, sexuality, and social satire. Fabuleux flourished in the medieval France, written in octosyllabic rhymed couplet. Chaucer adapted this genre and into English, targeting commoners, clergy, and women for satire. Next. Which of the following features is not characteristic of a fable? Option B:
Satirical treatment of clergy and social institution. Yes. Option C. Aristocratic ideals and chivalric codes. Fabrics were anti-aristocratic, mocking chivalric romance and exposing moral hypocrisy by humor, body content, satire, trickster characters. The Miller's tales ridicules the idea of courtly love and chivalry. Next, the found in the contemporary tales typically. Option C. Ridicule women and the clergy through comic and realistic narration. Fabulous is in Chaucer's the contemporary tales like the Miller's Tales and the Ryu Tales and comic earthy narratives and satirize sexual folly, hypocrisy and social pretensions. Often involve trickster plot, infidelity, and mocking of religious figure. Written in rhymed couplet, they are accessible and humorous. Next. Which genre is closely related to low comedy and characterized by buffoonery and exaggeration? Option C. Farce. What is farce? Generally means low comedy, intended to excite laughter by means of and exaggeration, buffoonery and exaggeration. The term is often used in derogatory scene to indicate an inferior variety of entertainment. Shakespeare's Comedy of Errors and Nicholas Udall Trap Doyster are remarkable examples of this type. Farce uses ridiculous situations, slapstick, and over the top characters to provoke laughter. Originates from French interludes in serious play, notable for exaggerated characters, types, absurdity, and physical humor. Next. Shakespeare, The Comedy of Errors is best classified as option C, farcical comedy. The play is filled with mistaken identity, slapstick, and rapid-paced comic confusion, making it a classic farce. Based on Plautus' Latin play Menacemi. Features two sets of twins leading to chaotic humor and ludicrous situations. Next. What distinguishes farce from other comic forms? Option C. Exaggeration, absurdity, and physical humor. Farce emphasizes visual gags, silly plots, and broad physical comedy without deep moral and philosophical exploration. Characters are often stereotypes, such as the fool and pompous man, the nagging wife. Unlike satire, farce does not aim to reform but simply to entertain. Next. Which of the following is true about Nicholas Udall Ralph Doyster? Option C. It is considered an early English farce. In 16th century,
one of the earliest English comedies, blending Roman comedic structure with English farcical elements. Written around 1552, often called the first English comedy, combines elements from Plutarch's comedy and native English farce. Next. The Great Fire of London 1666 had which of the following consequences? Option C. Destruction of thousands of buildings and curbing of the plague. A celebrated disaster in 1666, over 13,000 houses, approximately, houses and 87 churches and the old St. Paul Cathedral were destroyed. Old St. Paul Cathedral. Celebrated accounts of it occur in the contemporary diaries of John Elwyn and Samuel Pepys. John Elwyn and Samuel Pepys. Owing to disagreements among two citizens, the great architect Christopher Wren was not allowed to carry out his great plan for rebuilding the city, but he rebuilt St. Paul and many other churches. A beneficial consequences of the fire was that it ended a terrible epidemic of plague with hard devastated London in 1665. Option C is correct answer. Next. Samuel Pepys and John Elwyn are remembered for their eyewitness diaries detailing the Great Fire of London. Option C. Both were 17th century diarists. Their first-hand account provide vivid descriptions of the fire impact on social, urban and political life. Pepys' diary is the landmark in autobiographical prose. Next. Despite opposition, Christopher Wren was responsible for rebuilding. Option C. St. Paul Cathedral and several churches after the fire. Wren's original comprehensive plan was not fully implemented due to civic disagreements. He did reconstruct over 50 churches, notably St. Paul Cathedral, which becomes a masterpiece of English Baroque style architecture. Baroque. Next. The literary and artistic movement Futurism was founded in Option C. Italy by Filippo Tommaso Marinetti. Futurism, literary and artistic movement founded in 1909 by 1909 by Filippo in Italy, where
Italy. Most of its manifestos were issues in the Paris Daily Le Figaro. Marinetti defines the spirit and modern Latory traditionalism being stronger in Italy than in English or French. This movement is marked by violent departure from tradition. One of its aim was also to give formal expression of dynamic energy and movement of mechanical processes. Next, Futurism was primarily concerned with option C. Glorifying modern machinery and dynamic energy. No, option C. Reforming religious practices through art. Promoting pastoral simplicity and nature worship. No. No art and no nature. Reviving medieval artistic traditions. No. What? Glorifying modern machinery and dynamic energy. Futurism emphasized movement, industrial advancement, and mechanical power. It rejected traditionalism and especially in Italy, and aligned itself with modernity and the machine age. Often used violent rhetoric to shatter classical artistic norms. Next. Which of the following best captures the core spirit of futurism? Option C. Violent rejection of tradition and celebration of speed and modernity. Futurism, founded in Italy 1909 by Filippo, was a revolutionary movement in both art and literature. It sought to obliterate in past and glorify the dynamism, speed, machinery, violence, and technological innovation of the modern age. Marinetti Manifesto in Le Figaro advocated a total cultural reset, dismissing museums, libraries, and old values. This aggressive modernism influenced later avant-garde movement like Victorism, Vorticism, Dadaism, and Surrealism. Next. The term Zurich refers to a poem that option C provides didactic instruction on rural and agricultural life. Georgic poems dealing with rural life. After Virgil didactic poem The Georgics, in which he deals with farming. कविता का उद्गम वर्जिल की कविता द ज्यूरिक DEORGICS से हुआ है। यह कविता कृषि, पशुपालन और ग्रामीण जीवन पर शिक्षाप्रद डायडैक्टिक
जानकारी देती है। यह पेस्टोरल से अलग होती है क्योंकि पेस्टोरल रोमांटिक और इमेजिनेटिव होता है, जबकि ये व्यवहारिक और नैतिक, बिहेवियरल एंड मॉरल एंड डायरेक्टिव, उपदेशात्मक होता है। नेक्स्ट, द क्लासिकल मॉडल फॉर ज्योरिक पोइट्री इज एट्रीब्यूटेड टू, ऑप्शन सी वर्जिल। रोमन कवि वर्जिल द्वारा रचित सिरका CIRCA 29 BCE ही इस परंपरा की आधारशिला है। यह 4 पुस्तकों की कविता है जो खेती, बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे विषयों पर विस्तार से लिखी गई है। इसमें यूरोपियन साहित्य में रूरल लाइफ को साहित्यिक स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है। किसमें? नेक्स्ट, द जॉर्जियन एज। नाइनटीन फोर्टी टू 14 to 14। Georgian age in English literature begins with the First World War. It was named for George V. Although he resigned from 1910 to 1936, the war effected a fundamental change in English life and thought, a true start of a new age marked by a long and bitter struggle for national survival. It was a rich period for the novel. The Galsworthy, Wells, Bennett, and Conrad continued to do fine work, and in 1920s experimental fiction was developed by Dorothy Richardson, Virginia Woolf, and James Joyce. In the 1930s, Aldous Huxley, Elvin Waugh, and Graham Greene joined Lawrence in producing fiction that continued a serious commentary on social and moral values. Thomas Hardy produced extraordinary, powerful poetry in the volume Satires and of Circumstances, 1914. Throughout the Georgian age, Yeats was a major poetic voice, and was T.S. Eliot, whose The Wasteland was most important single poetic publication. It was a time of national trouble, of major war, of deep depression, and of declining empire. Yet the literary expression of the age was vital, fresh, and varied. Next, यद्यपि राजा 1910 में गद्दी पर बैठा, साहित्यिक दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद से तृतीय विश्व युद्ध से पहले 1940 तक का काल जॉर्जियन एज कहलाता है। इस युग में T.S. Eliot, वर्जीनिया वुल्फ, James Joyce, and W.B. Yeats prominent figure. Next, the Georgian age is named after which English monarch? Option C, George V, 1910 to 1936। राजनीतिक और साहित्यिक उथल पुथल का समय था। प्रथम विश्व युद्ध, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकतावादी लेखन के इस युग की विशेषताएं हैं। जॉर्जियन पोइट्री भी इसी युग से प्रकाशित हुई, जिसमें रूपर्ट ब्रूक, वार पोएट रूपर्ट ब्रूक, एंड D.S. लॉरेंस, वाल्टर डी ला मैरे जैसे कवि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, which literary genre flourished notably during the Georgian age?
Option C, the English novel. Georgian is 1914 to 1940, 14 to 40 में उपन्यास नॉवेल का विशेष विकास हुआ. जॉन गैल्सवर्दी मीन्स प्रोमिनेंट राइटर गैल्सवर्दी, H.G. वेल्स एंड अर्नोल्ड बेनेट जैसे लेखकों ने सामाजिक यथार्थवाद पर केंद्रित उपन्यास लिखे. 1920s के दशक में मॉडर्निस्ट फिक्शन का भी विकास हुआ. नेक्स्ट, in the 1920s, fiction in the Georgian period evolved through experiment by authors such as Option B, Dorothy Richardson, Virginia Woolf and James Joyce. ये लेखक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक और मानसिक यथार्थ के साथ उपन्यास को नई दिशा में ले गए. रिचर्डसन पिलग्रिमेज, and Woolf to the Lighthouse, Virginia Woolf to the Lighthouse, and James Joyce Ulysses. इसके उदाहरण हैं. इन लेखकों ने परंपरागत कथा शैली को तोड़ते हुए आंतरिक अनुभवों को प्राथमिकता दी. नेक्स्ट, which of the following authors produced socially and morally engaged fiction during the 1930s in the Georgian age? Option B, D.S. Lawrence, Alvin Waugh and Graham Greene. इन लेखकों ने सामाजिक, धार्मिक और नैतिक संकटों पर गहरी टिप्पणी की. लॉरेंस की रचनाएं यौन और सामाजिक विद्रोह की पड़ताल करती थीं. ग्रीन ने कैथोलिक धर्म और मानवीय संघर्षों को गहराई से चित्रित किया. वॉ ने आधुनिक समाज की विडंबनाओं को व्यंग्यात्मक लहजे में चित्रित किया. नेक्स्ट, T.S. Eliot, The Wasteland, a landmark modernist poem, was published during which literary period? Option C, Georgian age. 1922 में प्रकाशित इलियट की द वेस्टलैंड जॉर्जियन एज की सबसे क्रांतिकारी रचनाओं में से एक है. यह कविता आधुनिकता की विफलता, युद्धोत्तर हताशा और सांस्कृतिक पतन को व्यक्त करती है. यह मॉडर्निस्ट मूवमेंट की नींव रखती है जो इसी काल में विकसित हुई थी. नेक्स्ट, which of the following best characterized in Georgian age in England? Option B, a period marked by war, depression and literary vitality. यह काल वर्ल्ड वार फर्स्ट, आर्थिक मंदी मीन्स ग्रेट डिप्रेशन और उपनिवेशवाद के पतन से जुड़ा था. इसके बावजूद इस समय की साहित्यिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध रही. इलियट, वुल्फ, जॉयस, ईट्स जैसे लेखक इसी समय सक्रिय थे. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, विलियम बटलर ईट्स जैसे लेखक किसी समय सक्रिय थे. जॉर्जियन एज वॉज फुल ऑफ क्रिएटिव अनरेस्ट, स्टाइलिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड फिलोसॉफिकली इंक्वायरी. नेक्स्ट, what distinguishes Georgian poetry?
from the modernist work of Yeats, Eliot, and Pound, Ezra Pound. Option C. Its lyrical simplicity and lack of intellectual boldness. Means Georgian poetry was known for its simple language, pastoral themes, and avoidance of complex experimentation. इसके विपरीत यीट्स, इलियट, पाउंड जैसे आधुनिकतावादी कवियों ने गहरी बौद्धिकता, शैली जैसे इमेजिज्म, सिंबोलिज्म और गूढ़ सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग किया। जॉर्जियन पोइट्री को अक्सर कंजर्वेटिव एंड जेनिटल बोलते हैं। कंजर्वेटिव एंड GENTEEL. Next. The Georgian poetry anthologies appeared between option B 1912 and 1922. These anthologies were edited by Edward Marsh and featured poets like Rupert Brooke, Walter de la Mare, and Siegfried Sassoon, etc. यह संघर्ष फर्स्ट वर्ल्ड वार के से पहले और उसके दौरान अंग्रेजी कविता के लोकप्रिय लेकिन पारंपरिक रुझान को दर्शाते हैं। नेक्स्ट। Which of the following poets was not typically associated with Georgian anthologies? Georgian poetry, a series of verse anthologies, of which 5 volumes appeared between 1912 to 1922. It was called Georgian owing to the accession of George V when 1910. The poets represented it included Rupert Brooke, W.S. Davis, de la Mare, and D.H. Lawrence, John Mansfield, and Robert Graves. However, the contemporary work of William Butler Yeats, Ezra Pound, and T.S. Eliot, more original and more substantial than the works of Georgian poets, quickly made their movement seem relatively unexciting since 1950. There has been some revival of interest in it. It was lyrical, colloquial, but it lacked the strength of boldness of thought which marked the work of Yeats, Eliot, and Pound. Option C. Rupert Brooke, John Mansfield, and W.S. Davis. Ezra Pound was a leading figure of the modernist and imagist movement and not part of the Georgian group. Pound's poetry was stylistically radical and intellectually complex, while Georgian poetry remained traditionally lyrical, and Brooke, Mansfield, and Davis related to Georgian anthologies. Next. The decline of interest in Georgian poetry was largely due to option B, the rise of imagism and modernist experimentation. 1920s के दशक में मॉडर्निज्म के उभार के जॉर्जियन पोइट्री की लोकप्रियता को कम कर दिया। इमेजिज्म पाउंड एचडी ने कविता को संक्षिप्तता, स्पष्टता और बिंबात्मक शक्ति की ओर मोड़ा, जिससे जॉर्जियन लिरिकल ट्रेडिशन अप्रासंगिक लगने लगी। नेक्स्ट।
Which of the following poets maintained a dominant presence throughout the Georgian age? ऑप्शन सी विलियम बटलर ईट्स का काव्य जॉर्जियन एज के पहले, दौरान और बाद तक इफेक्टिव रहा। उन्होंने परंपरा और आधुनिकतावादी के बीच ब्रिज का कार्य किया। एंड हॉपकिंस, टेनिसन एंड ब्लेक तो पहले के एज के थे या पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। The poets such as T.S. Moore, W.S. Davis, and who wrote from about 1910 to 1919. The Globe Theatre was originally constructed using material from which earlier structure? Option C, the theatre, 1576. The theatre built by James Burbage in 1576 was England's first permanent public playhouse. जब इस थिएटर का पट्टा समाप्त हो गया तो बारबेज के पुत्रों ने उसकी लकड़ी को तोड़कर द ग्लोब 1599 में पुनः प्रयोग किया। इसलिए ग्लोब को द थिएटर की पुनर्जन्म संरचना मानी जाती है। द थिएटर यूज्ड बाय द लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी। Shakespeare's plays were performed there. He acted in it and was one of the shareholders. It was built by Richard Burbage in 1598. Built by Richard Burbage when 1598. Out of the materials of the theatre erected in 1576, the new site was the bank site on the south bank of the Thames in Southwark. It was built of wood, open in center, and the surrounding galleries were roofed with thatch. It is thought to have held about 1200 spectators. From the roof flew a flag depicting Atlas carrying a globe with a Latin inscription equivalent to all the world stays as you like it in. The theatre was burned down in 1613. Theatre burned down 1613. During a performance of Henry VIII. Rebuilt and finally pulled down in 1644. Next. Which company was associated with the Globe Theatre? Option C, the Lord Chamberlain's Company. Shakespeare was both actor and playwright of the Lord Chamberlain's men, which later became the King's Men under King James I. King's Men under King James I. यह कंपनी ही ग्लोब थिएटर की प्रस्तुतियां देती थी। नेक्स्ट।
William Shakespeare's involvement with the Globe Theatre included all of the following except option C, scenery designer. Shakespeare was a playwright, an actor and a shareholder in the Globe. प्लेराइट का स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछता है. एन एक्टर एंड शेयर होल्डर इन द ग्लोब. उस समय मंच सज्जा में सीनरी बहुत सीमित होती थी और शेक्सपियर का इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह सीनरी डिजाइनर नहीं थे. एक्टर थे, प्लेराइट थे, शेयर होल्डर भी थे. नेक्स्ट, द ग्लोब थिएटर वॉज लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ लंडन? ऑप्शन बी, साउथवार्क. Southwark, south of the river Thames, was a bustling entertainment district. Globe Theatre, beer-biting pigs, and और अन्य सार्वजनिक स्थल भी यहीं स्थित थे. यह क्षेत्र में शाही अनुमति से थिएटर चलाया जाता था क्योंकि लंदन के भीतर थिएटर प्रतिबंधित थे. नेक्स्ट, द ग्लोब थिएटर कुड एकोमोडेट, इसके भी स्पेलिंग पूछी जाती है. अप्रोक्सीमेटली, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स? ऑप्शन C, 1200. The original Globe Theatre had a capacity around 2,000 to 3,000 spectators. यह 3 स्तरों में बना था: ग्राउंडिंग्स, स्टैंडिंग ऑडियंस, गैलरीज एंड बॉक्सेस. यह एलिजाबेथन युग का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध थिएटर था. Next, what symbol typically flew from the Globe Theatre to signify a performance? Option C, Atlas, bearing a globe. The Globe Theatre's emblem showed Atlas carrying the world, symbolic of the theatre's name and universal themes. जब मंचन होता था तो इस प्रतीक को एक झंडे पर दर्शाया जाता था. यह दर्शकों को सूचित करता था कि उस दिन नाटक हो रहा है. दिस इज साइन ऑफ परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, द फ्रेज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, फेमसली फ्रॉम एज यू लाइक इट, was quoted during a performance of which play when the Globe Theatre burned down in 1613? Option D, Henry VIII. The Globe Theatre burned down on 29 June in 1613 during a performance of Shakespeare's Henry VIII. Cannon fire during the stage effect ignited the thatched roof. यह वाक्य एज यू लाइक इट से प्रसिद्ध है, परंतु घटना हेनरी VIII के मंचन के दौरान हुई थी. नेक्स्ट, द ओरिजिनल ग्लोब थिएटर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर इन. ऑप्शन बी, 1613. ग्लोब थिएटर में 1613 में आग लगी थी. यह एक विशेष प्रभाव स्टेज कैनन के कारण हुआ था जिसमें छप्पर में आग लग गई थी. पुनर्निर्माण इसका 1614 में 1614 के में इनका रीबिल्ड हुआ. नेक्स्ट,
Which novel is considered the first Gothic novel? Option C, Castle of Otranto. Horace Walpole, The Castle of Otranto, 1764, is recognized as the first Gothic novel. नॉवल इसमें मध्ययुगीन महल, अलौकिक घटनाएं और भय का वातावरण था। गॉथिक तत्वों के क्लासिक उदाहरण इसे गॉथिक फिक्शन की उत्पत्ति माना जाता है। व्हाट इज गॉथिक नॉवेल्स? द 18th century stressed and supreme value of reason and the values that go with reason despite the imaginative richness of Pope and Swift. This emphasis tended to repress emotion and more mysterious forces in the personality, which was thought of a barbaric and therefore medieval and Gothic. Gothic became associated with all that what was felt to be fantastic, grotesque, एकदम से विचित्र, white, जंगली, savage, and mysterious. The first Gothic novel was Horace Walpole, the first Gothic novel, and by Horace Walpole, Castle of Otranto, in 1764. Monk Lewis, the Monk, 1796. The Monk, and Anne Radcliffe, The Mysterious of Udolpho, 1794, which was satirized by Jane Austen in Northanger Abbey. The Byronic heroes, especially in the Byron dramas, Manfred is Gothic in spirit, but by the time the Gothic word was being taken much more seriously. Next. The rise of Gothic novel can be seen as a reaction against option C, the rationalism of the Enlightenment. Enlightenment युग 18th century में तर्क और विवेक के और विज्ञान पर जोर था। गॉथिक फिक्शन ने इसके विपरीत भावनाओं, रहस्यवाद और अलौकिक तत्वों को अपनाया। यह एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया थी जहां कल्पना ने तर्क पर विजय पाई। नेक्स्ट, which of the following authors is not directly associated with the Gothic novel tradition? Option D, George Eliot. George Eliot was a Victorian novelist known for the psychological realism and Victorian novelist. Middlemarch. Not Gothic fiction. Horace Walpole, Castle of Otranto, and Radcliffe, The Mysterious of Udolpho, and Matthew Lewis, The Monk are classic Gothic novel writers. Next, Jane Austen Northanger Abbey is primarily a option B, satirical parody of Gothic fiction. ऑस्टिन ने नॉर्थिंगर एबी में गॉथिक उपन्यासों की व्यंग्यात्मक नकल की, लाइक पैरोडी। यह गॉथिक तत्वों को मजाकिया और आलोचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। यह एक सामाजिक सटायर के साथ साथ रोमांचक कहानी भी है। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ द बायरनिक हीरो इन बायरन्स वर्क is considered Gothic because
Option C. He embodies a brooding, rebellious, mysterious spirit. बायरनिक हीरो एक अंधकारमय, विद्रोही और रहस्यमय पात्र होता है जो गॉथिक भावना की पहचान है। यह क्लासिकल या कॉमिक पात्रों के से अलग गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं को दर्शाता है। यह गॉथिक उपन्यासों और नाटकों का एक महत्वपूर्ण पात्र रूप है। Byron, example, Manfred is in Gothic spirit. Next. Which work is considered as Gothic drama by Lord Byron? Option B. Manfred. मैनफ्रेड एक गॉथिक नाटक है जिसमें रहस्य, आत्मा की पीड़ा और अलौकिक तत्व हैं। यह बायरन के गॉथिक और रोमांटिक रचनात्मकता का उदाहरण है। एंड डॉन जुआन, द कॉर्सियर एंड चाइल्ड हेरोस पिलग्रिमेज, दीज आर रिलेटेड टू बायरन। नेक्स्ट, द ग्रेवयार्ड स्कूल of poetry is associated with option C. meditative poems on death and morality. What is graveyard school? A group of 18th century poets who wrote long poems on the death and immorality. The graveyard poetry was related to early stages of the English Romantic movement, Grace Elegies, written in a country churchyard when 1751. Elegy written in country churchyard. And Robert Blair, The Grave, when 1743, are the most typical poems of the moment. ग्रेवयार्ड स्कूल के कवि मृत्यु, क्षणिकता और जीवन के नश्वर पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड वन 1751 इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह अंग्रेजी रोमांटिक युग के पहले की गंभीर और चिंतनशील कविता की शुरुआत थी। नेक्स्ट, the poem Elegy written in country churchyard 1751 was authored by option D. Thomas Gray. Elegy written in country churchyard is Thomas Gray's most famous poem. यह कविता मृत्यु और सामान्य लोगों के जीवन की नश्वरता पर चिंतन करती है। विलियम ब्लेक, रॉबर्ट ब्लेयर एंड एडवर्ड यंग के अन्य प्रसिद्ध कार्य हैं, लेकिन यह कविता थॉमस ग्रे की है। नेक्स्ट, which of the following poems is considered a foundational work of the graveyard school? Option B. The Grave by Rupert Blair in 1743. The Grave 1743 by Robert Blair is a key poem in the graveyard school tradition focusing on death and mortality. यह कविता मृत्यु के विषय को गंभीर और ध्यानपूर्वक प्रस्तुत करती है। Lycidas by Milton, The Task by Cooper and The Seasons Thompson, but not related to graveyard school. Next, Grub Street originally referred to. What is Grub Street? Once the name of a London street, now Milton Street, inhabited by literary hacks in the 17th and 18th century.
century, hence applied to any form of literary hack work. Option C. A London street notorious for hack writers. Grub Street was a real street in London known in the 17th-18th century for cheap literary hacks producing low quality और commercial writing. अब इसका नाम हैक राइटिंग का पर्याय बन गया है. यह कोई काल्पनिक स्थान या फैशनेबल साहित्यिक क्लब नहीं था. नेक्स्ट. The term Grub Street in literary uses symbolize option D. Mediocre literary production by professional hacks. Grub Street symbolize poorly written, commercialized literature by writers paid to produce large quantities quickly. यह साहित्य में गुणवत्ता की कमी और बाजार आधारित लेखन का प्रतीक है. यह न तो उच्च कोटि के लेखक हैं न ही रोमांटिक साहित्य का उदय. Elite and intellectual writers no. The rise of romantic literature no. The commercialization of poetry no. Next. In Aristotle concept of tragedy, hamartia refers to. Before jumping the question answer, let's understand the hamartia. The error, frailty and mistaken judgment through which the fortune of the hero of a tragedy are reserved. Hamartia may be the result of bad judgment, bad characters, ignorance, inherited weakness, accident or any of many other possible cases. It must, however, express itself through a definite action or failure to act. Option B. A tragic flaw or error in judgment. Hamartia is a tragic flaw or mistake made by hero that leads to their downfall. यह ट्रेजेडी के नायक की कमजोरियों का गलत फैसलों को दर्शाता है. कमजोरी या गलत फैसलों को दर्शाता है. यह कोई अलौकिक हस्तक्षेप या नायक की अंतिम मृत्यु नहीं है. And today's second last question. Which of the following best defines hamartia in tragic theory? Option A. Noble intention with poor consequences. Hamartia is often understood as a tragic flaw, a mistake or error in judgment that arises from a noble intention but leads a disastrous consequences. यह नायक की एक कमजोरियां या भूल होती है जो ट्रेजेडी का कारण बनती है. Divine punishment और catharsis are different concept in tragedy, and stylistic division related to poetry, not hamartia. Related to poetry, not hamartia. Next. And today's last question. Antony's speech over Caesar's body in Shakespeare's Julius Caesar is an example of. Option C. Heron's. Heron's vehement speech addressed to a large audience. Example: Antony's speech over Caesar's body. Antony's speech is a passionate, vehement public address meant to persuade the crowd, which defines a heron. यह भाषण भावनात्मक होता है और जोशीला होता है जो जन समूह को प्रभावित करता है. And soliloquy is when a character speaks alone
Elegy is a mournful poem, and invocation is a prayer or calling upon a muse like Paradise Lost. That's it. I hope you like this session, and if you like this session, thanks for watching. Keep revising, keep rising. For more high yield content, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next session. Until then, stay scholarly, stay tuned. Thank you.